Hello everyone, I welcome you all to another weekly analysis video जहां पर हम बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में किस तरीके से निफ्टी मूवमेंट कर सकता है और साथ ही साथ वी विल डिस्कस some stocks that can show good movement in the coming week. As you can definitely see on a daily time frame, RSI हमारा 60 to 40 के बीच में आ चुका है, डबल टॉप बन चुका है एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है फॉर निफ्टी एंड दिस रिजेक्शन जोन ऑफ 18,000 to 18,150. अगर ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ऑन द डाउन साइड ब्रेक होती है वी कैन डेफिनेटली सी दिस टारगेट ऑफ 17,200 to 17,150. At the same time we also discussed these Fibonacci retracement levels. So निफ्टी ने एक डबल टॉप बना के 18,000 के क्रूशियल लेवल से रिजेक्शन ले लिया है, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है एंड नाउ एक बड़ी ही बियरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दी ऑन लास्ट फ्राइडे. वीकली टाइम फ्रेम पे इफ वी सी डेफिनेटली आरएसआई 60 से एक रिजेक्शन लिया है निफ्टी ने, सेम उसी जोन के आसपास से पहले अप्रैल, अगस्त एंड सितंबर में भी निफ्टी ने यहीं से रिजेक्शन लिया था. So yes, our levels are still there as discussed in our last video also. Breakdown हमें मिल चुका है. Let's see. Until and unless Nifty crosses this high of 18,000 हमें एक bearish movement देखने को ही मिलेगा या एक sideways consolidation movement भी देखने को मिल सकता है. सो निफ्टी के साथ ही बाकी सारे सेक्टर भी बेयरिश हो चुके हैं. सिर्फ एक ही सेक्टर है एफएमसीजी जो अभी भी एक बुलिश मूवमेंट शो कर सकता है. सो लेट्स सी some stocks which you can trade in the upcoming week. But first of all, let's see how our predictions went. So last week I posted some stocks on Instagram. उनमें से एक स्टॉक था एसबीआई ऑन एन आर्ली टाइम फ्रेम. सो एज यू कैन सी इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ही एसबीआई मूवमेंट कर रहा था, बट जैसे ही ब्रेकडाउन आया रिटेस्ट किया एंड अ वेरी मेजर फॉल वी सॉ इन एसबीआई. सिमिलरली सेम थिंग हैपेंड इन आईसीआईसीआई एज वेल. रिजेक्शन लिया, रिटेस्ट किया सपोर्ट ट्रेंड लाइन को विच देन बिकेम अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एंड देन डाउनफॉल. सेम विद बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा था. एक बड़ी बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ ऑन एन अर्ली टाइम फ्रेम एंड देन देयर वाज अ डाउनफॉल which again can continue further down. फेडरल बैंक एक जोन में मूवमेंट कर रहा था और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा था, दिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन. जैसे ही ये ब्रेक हुई रीटेस्ट हुआ रेजिस्टेंस जोन एंड देन a major fall in Federal Bank also, and currently it is near our support zone as well. अगर ये भी ब्रेक होता है then we can see further movement in Federal Bank also. So these were the last week stocks that I had posted. So if you have not followed me on Instagram, there is a link down below. Click on it. You can follow me on Instagram as well. वहाँ पर हम ऐसे ही स्टॉक्स एक स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए पोस्ट करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. यू कैन चेक दोज आउट. ओके, सो आई विल रिमूव दी स्टॉक्स नाउ. Okay, so these are some of the potential stocks. So as you can see, on a weekly time frame, TCS, RSI is below 40, एक सपोर्ट जोन के पास में है ऑन वीकली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखते हैं तो यस,
सपोर्ट बार बार ले रहा है वहीं से, बट एट द सेम टाइम एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी फ्रॉम द अपसाइड रिजेक्शन दे रही है. RSI is again below 40 on the daily time frame. On an hourly time frame, this is the kind of setup. एक बेस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे अराउंड द लेवल ऑफ 2979 टू 2994, और ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चल रही है. अगर इसका ऑन द डाउन साइड ब्रेक डाउन आता है तो वी कैन सी फर्दर डाउन मूवमेंट. On the upside, we can also see a movement, but there are bigger chances of a down movement because of the world markets and Nifty. At the same time, if you see RSI is showing some strength at the same levels, RSI divergence भी हमें देखने को मिल रहा है. So let us see how it goes in the upcoming week. But I definitely suggest you add it into your watch list as well. Next is Wipro. We had suggested this stock also on Instagram on an hourly time frame. इसी सपोर्ट जोन को ब्रेक करते हुए विप्रो ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिया लास्ट वीक. It has now broken down this support zone on an hourly time frame. Can definitely retest this zone which will now act as a resistance, and वहाँ पर जैसे ही आपको एक bearish candle का formation दिखता है, you can definitely go for short. Next is Emphasis. Emphasis also following a resistance trend line from the upside. If you see on a daily time frame, so on a daily time frame, the RSI is below 40. On weekly, it is also below 40. On hourly, again, it's below 40. So definitely, it's in a bearish zone. The trend is also bearish. So Nifty is bearish, sector is bearish, and now the stock is also bearish. So definitely, if this support zone is broken, we can definitely go ahead with a short in Emphasis. Power Grid was following this support trend line on the upside, but now it has broken down, and now this trend line is going to act as a resistance. एक resistance की तरह act करेगी. यहाँ पर एक हमें हैमर कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, एंड उसके जस्ट बाद एक डोजी. Yes, if you check the volume also, that's a very big volume. दैट मीन्स यहाँ से एक पुल बैक हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा पावर ग्रिड में, एंड जैसे ही ये पुल बैक इस रेजिस्टेंस जोन के पास में आता है, वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट. आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो फॉर अ लॉन्ग बिकॉज द मूवमेंट कैन बी स्लो because RSI is below 40, the markets are bearish, so the movement can be on the upside or sideways. So slow movement can be expected, बट जैसे ही इस जोन के आसपास आके पावर ग्रिड एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, वी कैन डेफिनेटली गो फॉर अ शॉर्ट. Reliance was also following this support trend line and has broken it down. Further movement on the downside can be expected in Reliance also. Ultra Camco, हमने ये स्टॉक ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम सजेस्ट किया था, and definitely it's moving how we suggested. So this is the resistance trend line. इस सपोर्ट जोन से ब्रेक डाउन आया, रीटेस्ट हुआ, एंड देन फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट. RSI इज बिलो 40, 40 के लेवल से रिजेक्शन भी लिया है.
आर्ली टाइम फ्रेम पे इट्स ऑल्सो below 40. Daily time frame, yes, it's below 40. So on an hourly time frame, definitely जैसे ही इस जोन का breakdown आता है, we can go for a short position. And the interesting thing is formation of these small candles. This will definitely be something to watch, because जैसे ही ऑन द डाउन साइड ब्रेकडाउन आता है, बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है. अगर अपसाइड मूवमेंट आता है और इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आता है, तो वी कैन डेफिनेटली सी एन अपवर्ड मूवमेंट इन अल्ट्राटेक सीमेंट. बट माय पिक वुड बी टुवर्ड्स अ ब्रेकडाउन टुवर्ड्स बियरिश मोमेंटम. हिंदुस्तान यूनिलीवर. सो definitely Hindustan Unilever, as FMCG sector is still bullish, we have to look for longs in Hindustan Unilever, but again with strict stop loss. So currently it is following this support trend line. स्मॉल कैंडल फॉर्मेशंस भी हुए हैं यहाँ पे. एक रिजेक्शन कैंडल ऑन द अपसाइड देखने को मिला है, and now it's back towards its support level. So on a daily time frame, it's above 60, RSI is above 60, on weekly as well, monthly as well, and now it can take a support on RSI 60. अगर यहाँ पे हमें एक ऑन एन आर्ली टाइम फ्रेम एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन दिखता है, वी कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग and buy this stock. Next is ITC. We had also suggested ITC on a 15-minute time frame. So यहीं से breakout मिला, retest हुआ, and then an upward momentum. Okay. So on an hourly time frame, RSI is above 60. Daily maybe it's above 60. Weekly maybe it's above 60. So definitely, if I want to trade, I will be long in ITC as well. And बहुत ही अच्छी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ भी चल रहा है ITC. If you see this trend line, एक फेक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला, बट इट टर्न आउट टू बी अ बुलिश कैंडल एंड देन अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यूड. अभी ऑन एन आर्ली टाइम फ्रेम it's in a range. If you see on a 15-minute time frame, yes, currently ITC is in a range. अगर इसका on the upside breakout मिलता है, we can definitely go for long and expect nice movement on the upside. But breakdown मिलता है on the downside, it has to break this support trend line. But again, as FMCG sector is bullish, I would not trade into ITC with a bearish mindset. जैसे I will expect a breakout from this zone, a retest, and then formation of a bullish candle to enter into a trade in ITC. Next is Godrej Properties. RSI is below 40 on weekly, daily, hourly time frame. On daily, there is a double top formation which has taken place, an M pattern. And 15, okay, so on 15-minute time frame, RSI is between 60 and 40. So on the higher time frames, RSI is below 40. Higher time frames are showing this stock to be bearish in nature, but 15-minute time frame is showing this stock to be between 60 and 40 in a consolidation, which is actually true. The formation of these small candles with rejection being taken from 20 moving average definitely shows that it's in a consolidation, but there are high probabilities for
गोदरेज प्रॉपर्टीज टू ब्रेक डाउन होने की पोटेंशियल गोदरेज प्रॉपर्टीज में बहुत हाई है. It's also following a resistance trend line, as you can see here. सो यहाँ पे जैसे ही हमें एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, वी कैन गो अहेड एंड बी बियरिश इन गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड शॉर्ट द स्टॉक. So these are the stock picks for this week: TCS, Wipro, Mphasis, Power Grid, Reliance, Ultratech Cement, Hindustan Unilever, ITC, and Godrej Properties. So I hope you liked this video. You learned a lot from the weekly analysis of Nifty as well as the stock analysis. We have given you some stocks which you can trade, जो आप इस week trade कर सकते हैं on the bearish side as well or bullish side as well. Please like this video, comment down below any suggestions that you have. And if you want such weekly analysis videos and more such stock analysis and more such content, subscribe to our channel. Thank you.